ऑलराइट, शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। एज ऑलवेज हम लोग सब्जेक्टिव सवाल पे फोकस करेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल पे फोकस करेंगे, नॉट द सब्जेक्टिव वंस। एमसीक्यूज एक आंसर वाले, मल्टीपल आंसर वाले एंड ऑल्सो असर्शन रीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप थियोरी सेशंस के को ढूंढ रहे हैं देन bento.me/iteachcam, गो देयर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्कॉर्ड सर्वर पे आइए इफ यू हैव डाउट्स। पहला सवाल, Which cell will measure standard electrode potential of copper electrode? इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड करेगा? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? You gotta do pressure equal to 1 bar or 1 atmosphere for gases, and for ionic species concentration needs to be 1 molar. Now let's eliminate 0.1 no, 0.1 no, so you got 1 1, okay, all looks good. Oh, look at that, aqueous, what, 2. So the only one that fits is option 3. It's that simple. Let's move on. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सही सवाल है। फॉर एम जी इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। ये है तुम्हारा y इक्वल टू m, ये पूरा हो गया माइनस m एक्चुअली, और ये हो गया x और c, y इक्वल टू एम एक्स प्लस c। अच्छा, ये तो बिल्कुल मेरे सर के बीच हो गया ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस c। इस फॉर्म में अगर मैं लिखूँ, सो यू नो राइट अवे दैट द कॉन्स्टेंट इज सम वैल्यू, ठीक है। अब वो पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू, दैट्स अ टफ वन, बट हे कुछ इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे, तो या तो ऊपर या तो नीचे हो सकता है। इन दिस केस इन तीनों में इंटरसेप्ट है, ठीक है। व्हाट आर वी प्लॉटिंग? वी आर प्लॉटिंग ऑन द वाई एक्सिस दिस, एंड ऑन द एक्स एक्सिस आई एम प्लॉटिंग log ऑफ mg2 प्लस, नॉट माइनस m log ऑफ 1 by mg2 प्लस। इसको क्या करें? वेल देखो, log ऑफ 1 by b इज सिंपली गोना इक्वल टू माइनस log b। यू वुड यूज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग्स, फिर इसको कर देते हैं प्लस, और ये चला जाता है ऊपर। इन दैट केस नाउ इट्स जस्ट अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दैट लुक्स लाइक दिस। सो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा आपका आंसर। दैट्स इट, दैट्स इट, डोंट इवन थिंक अबाउट दिस, दिस इज ऑल यू गॉट टू डू इन दिस क्वेश्चन। एंड इफ यू वांट टू एनालाइज द अदर ऑप्शंस दैट मे लुक करेक्ट, देखो ये वाला जो है ना, थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा शेडी लग रहा है, एंड यू मे बी टेम्प्टेड टू मार्क दैट एज करेक्ट एज वेल, बट इसमें ध्यान से देखो, अगर लॉग नहीं होता देन मे बी दैट वे हैव बीन द केस, बट लॉग के साथ this is the right answer. If you're wondering what is that about, थोड़ा मैथ्स को देखो, it does become an exponential equation, right? अगर e पावर मैं सब जगह डाल दूँ तो। Anyway, think about that later. Answer to this one is option 2. Which of the following statements is correct? Statement, इनमें से कौन से statements सही है? E cell and delta G naught or delta G of a cell reaction are both extensive. नहीं, ये extensive है, ये नहीं है, which means ये intensive है, ये नहीं है, right? तो दोनों गलत हो गए इसमें। ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सही बोला। डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ ये सही है, दिस गुड। ई सेल इज एक्सटेंसिव, दिस इज रॉन्ग, इंटेंसिव उल्टा हो गया। ओके ग्रेट, वी आर ऑन अ रोल। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन क्या हो सकता है? सब पोटेंशियल डिफरेंस से ही रिलेटेड है। अब ये तो थियोरी वाला सवाल है, ठीक है। नाउ अनलेस यू नो द आंसर यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू दिस, दिस इज थियोरेटिकल आइडिया, इट्स द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मे बी यहाँ पढ़ा है, खैर। Which of the following statements is not correct about an inert electrode in a cell? Inert electrode का आइडिया ये होता है कि वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है, but it does not take part in the reaction, ठीक है। So it does not participate cell reaction, ये सही है। Provide surface area, सही है। Provide surface for conduction of electrons, हाँ या काइंड ऑफ ऑल्सो। इट प्रोवाइड surface for redox reaction. Redox मतलब दोनों रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेम जगह हो रहे हैं, which is not the case. I think मेरे हिसाब से यही होना चाहिए सही, या नॉट करेक्ट, मतलब सही आंसर ये है। An electrochemical cell can behave like an electrolytic cell. Electrolytic मतलब उल्टा हो गया। Electrolytic cell, electrochemical cell दो टाइप के होते हैं, galvanic और electrolytic. Galvanic मतलब कि chemical reaction producing और furnishing electrons, जिसकी वजह से electricity is sort of produced. Electrolytic मतलब electricity बाहर है outer cell में, you have a extra voltage that causes some chemical reaction to happen. If that happens मतलब कि E जो बाहर वाला है, which is E external, is greater than E cell, तभी होगा ना, reverse हो जाता है reaction, all that if you've read the theory. Which of the statements about solution of electrolytes is not correct? Conductivity of solution depends on size of ions. Wow, this is interesting. Size of ions पे depend करता है कि नहीं? हाँ भाई, जरूर करता है। अगर साइज बड़ा हो गया तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। Conductivity depends on viscosity. Yes, अगर viscosity ज़्यादा हो जाएगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी। Conductivity does not depend on solvation of ions. ये भी गलत है। I mean, नहीं गलत। You have to find not correct ना। हाँ, तो this is the right answer because it does depend on solution. है ना, सॉल्वेशन मतलब कि अगर आयन बड़ा हो गया तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। Conductivity of solution increases with temperature. Yeah, sure, all right, because temperature बढ़ जाता है, things start moving faster. If you assume that each of these ions are independent and बहुत far apart, so
ट्रीट देम लाइक गैसेस, टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ जाता है उसका मोबिलिटी. दैट्स द असम्पशन हियर. ओके, यूजिंग डेटा हियर. स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? मजेदार सवाल शुरू हो गया अभी. रिड्यूसिंग एजेंट, यू गॉट टू पुट योर थिंकिंग कैप ऑन. रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज. ठीक है, सो इट लाइक्स बीइंग ऑक्सीडाइज. एंड यहां पे अगर आप देखेंगे दे आर ऑल रिडक्शन पोटेंशियल्स, ऑल रिडक्शन पोटेंशियल. सो उसका जो आप अगर इसको जो है पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल, ठीक है, लेट्स सी विद दैट. स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वांट्स टू गेट ऑक्सीडाइज, रिडक्शन पोटेंशियल दिया, मतलब कि इसको अगर रिएक्शन को उल्टा करेंगे देन दैट द मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू जिसकी होगी दैट शुड बी आंसर. थिंक अबाउट व्हाट आई सेड, आई सेड वन मोर टाइम. अगर इन रिएक्शन को आप रिवर्स करोगे एंड द मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू विल गिव यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वही आप देखना चाहते हो. दैट लुक्स मी टू बी दिस गाय हियर, राइट. इफ आई गो फ्रॉम Cr to Cr3+, तो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे कौन सा बच्चा बढ़िया हुआ? क्रोमियम, बिकॉज क्रोमियम वांट्स टू गेट टू Cr3+, टेंड्स टू, टेंडेंसी है उसकी. ठीक है, अगर हम उसके राइट कंडीशंस है तो इट वुड लव टू डू दैट. दैट्स द जनरल आइडिया. ठीक है, सो 8th वन इज नाउ 3. वेट, लिखा मैंने Cr, मार्क किया Cr3+2. अच्छा, सेम वाली चीज. हाँ, यूजिंग डेटा गिवन, ये वाले सवाल वेरी वेरी फन. यू नीड टू नो बेसिक्स टू फिगर दिस आउट एंड फाइंड आउट व्हिच इज फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब वही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इट लाइक्स गेटिंग रिड्यूस. लाइक्स गेटिंग रिड्यूस मतलब कि ये वाली स्पीशीज जिसका जो है सबसे ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव होगी. सो 1.51 इज द वन दैट हैज द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, एंड द स्पीशीज दैट लाइक्स गेटिंग रिड्यूस बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज MnO4- अमंग दीज. ओके, लेट्स मूव ऑन. सेम चीज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर. रिड्यूसिंग पावर मतलब लाइक्स गेटिंग ऑक्सीडाइज. अब टॉप में तो क्रोमियम आ जाएगा, राइट. सो लेट्स, बिकॉज वी ऑलरेडी फाउंड आउट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. उसके बाद कौन सा आएगा? नाउ यू मे गेट कंफ्यूज, Cr3+ कहां से आ गया? Mn2+, तो Mn2+, Cr3+, ये कहां से आ गया? लुक एट दीज रिएक्शंस केयरफुली. ओके, Cr3+ इधर है, Mn2+ इधर है. क्यों? क्योंकि ये भी Cr ही था. गाइस रिमेंबर टू फिगर आउट कि कौन सा स्पीशीज, द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, राइट, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर और स्ट्रेंथ क्या होगा जो सबसे बढ़िया रिड्यूस करता है, या दैट शुड हैव द मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं रिएक्शन रिवर्स करूं. ओके, तो 0.74 के बाद क्या होगा? -1.33, -1.36, -1.51. इन तीनों में से -1.33 मोस्ट पॉजिटिव है. आई नो दैट्स अ वियर्ड वे ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, बट इट इज ट्रू. इस केस में हेंस यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन हियर. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज कि अरे Cr और Cr3+ तो सेम स्पीशीज सेम रिएक्शन में आ रहे. नो, यू आर टॉकिंग अबाउट अनदर रिएक्शन दैट इज Cr3+, यू नो, getting and forming Cr2O72-, right? That's the reaction we're talking about. इसीलिए क्रोमियम के बाद Cr3+ आता है. Post that you get chloride ion and then Mn2+. So सबसे कम हो गया Mn2+, then chloride, then Cr3+, and then Cr. That's the idea here. Probably the most, you know, दिमाग में इरिटेशन करने वाला सवाल in this whole thing, but you need to think a little bit in this whole, जो भी हम लोग सवाल देखने वाले हैं, I feel. But great question. Use the data given question 8 and find out the most stable ion in its reduced form. Most stable ion in its reduced form. Reduced form कहाँ पे था? ये सब बॉक्सेस हटा देते हैं. Reduced form मतलब राइट हैंड साइड वाला. मोस्ट स्टेबल मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू. सो Mn2+ होना चाहिए, है ना? Which question is this? This is question number 11, right? Mn2+, mark it and move on. Use the question data, find out the most stable oxidized species. वही है. Oxidized species मतलब दूसरी तरफ, तो oxidized species मतलब इस तरफ. And we already found that out, right? अगर ये भाई साहब ऑक्सीडाइज होने को तैयार हो रहे हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मींस दिस मस्ट बी द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीशीज. Cr3+. कूल, या? दिस इज अ फन सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड अ लिटिल बिट हैवी, क्योंकि जो है हम लोग एक के बाद के लिंक करके कर रहे हैं. तो इफ फॉर व्हाटएवर रीजन कोई चीज मिस आउट हो गई हो, जस्ट रिवाइंड एंड वॉच इट अगेन. बट दिस इज अ कूल वे टू नो ये पूरी थ्योरी इनसाइड आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 इज व्हाट? देखो, दिस इज अ फन क्वेश्चन. Al2O3 मतलब I've got 2 aluminum 3+, obviously, right? Then I need to get to this, or I have 3 oxide 2- that I need to get to this state. Okay, both mean the same thing. एक रिडक्शन वाला है, एक ऑक्सीडेशन हाफ है. ऑक्सीडेशन हाफ में, रिडक्शन हाफ में चलो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. You get where I'm coming from? So the number of electrons that are required for 1 mole of aluminum oxide Al2O3 is going to be 6 electrons. मतलब कि 6 farad चार्ज है ना, 1 मोल कर दो, एक इसके लिए 6, एक मॉलिक्यूल के लिए 6, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए 6 farad. ठीक है,
because 1 farad is basically वही तुम मालूम 96,500 etc कूलम. खैर, now this is in the options, but be careful. मुझे निकालना है 1 mole of aluminium, not 1 mole of this. From 1 mole of Al2O3 I get 2 aluminium, obviously, जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो divide that by 2. So this is going to be 3 farad. Fun question. You can mess this up. This is why it's fun. Cell constant or conductivity cell? Well, it's a constant. It remains constant. Please don't think. Okay. L by A. Length A. No. None of these. This is the answer. While charging the lead storage battery. यार ये theory है इसमें आपको मैं कोई philosophy नहीं बता सकता हूँ. This is the answer. You need to go back and read the diagram with PbSO4 and all that क्या होता है. If you like me to do that, I have done it in my theory session. जाके देख लीजिए और just read the NCERT. Okay, let's move on. Lambda naught M for NH4OH क्या होगा? NH4OH. Now this is the idea. ये जो lambda naught M क्यों use होता है and all that क्यों where did it come from? This is one of the uses, right? Because you've got like this is a weak electrolyte and this is a strong electrolyte. What am I plotting? I'm plotting lambda naught M versus root concentration etc. plot करो तो इस टाइप का देखा, right? Weak बढ़ता है and all that. So there's no way for you to know कि where exactly on this line does this exist. और मुझे lambda naught M इसका weak electrolyte का नहीं निकाल सकता मैं आसानी से. This is where these laws and these ideas come into the picture. अब इसी तरीके से हम लोग उसको निकालते हैं. ठीक है, ये theory बताने की कोई जरूरत नहीं थी, but good question anyway. खैर, so what do I need to do? I need to get NH4 plus ions from somewhere, OH minus ions from somewhere. Usually you get from a salt like NH4Cl and NaOH maybe something like that. यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है क्या? हाँ, देखो NH4Cl and NaOH इन दोनों को ऐड करो and घटाओ NaCl, because if I do this, these get cancelled out and what's left is just NH4OH. Hence this is the answer. Yeah, maybe actual JEE में या NEET में you may have some numbers around this, but अगर ये directly आए तो great, easy question. If the electrolysis in the electrolysis of aqueous NaCl, which of the following half cell reactions will occur at the anode? Aqueous. अगर पानी नहीं होता तो सोडियम भाई साहब निकलते. It would get at the cathode chlorine gas would come out at the anode. But you have water, which means ये reaction या ये reaction इन दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है. And I don't think it's possible to get this guy right here. This is the one that is challenging. Yeah, sodium निकलता है, or which of these reactions is challenging by the way? Well, look at the E naught values, right? जो E naught values की कम हुई, that just works. And hence, what you're going to need is, oh, okay, electrolysis के लिए, if I need a smaller value, by the way, these two are obviously at the anode, क्योंकि यहाँ पे oxidation हो रहा है, and these two are at the cathode, reduction हो रहा है. Smaller the value, better it is, right? So, that's it. कम एफर्ट लगेगा इसको निकालने में, ऑक्सीजन एट द एनोड. ओ, एनोड में पूछा था, ठीक है. 17:2. लेट्स मूव ऑन. खत्म हो गए सिंगल करेक्ट वाले, मल्टीपल पे जाते हैं. इन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेट्स व्हाट? पॉजिटिव वैल्यू मतलब इट लाइक्स बीइंग रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू दिस कपल, राइट? Stronger reducing agent likes being oxidized. No, it likes being reduced. Why would that doesn't make sense, right? It likes being oxidized. So, okay, this, it likes being reduced. So, it is a stronger oxidizing agent. Reduced. अगर खुद reduce हो रहा है तो अच्छा oxidizing agent किसी और चीज़ को oxidize करेगा. That's the idea. CO can displace? No, it cannot. 18, 2 and 4. For some half cell reactions, is यहाँ पे E naught value दी है. On the basis of these, mark the correct answer. ठीक है, कुछ दिया है. Okay, this is SHE, right? And ये है पानी. This is dilute, by the way, and this is concentrated. अगर ये NCERT में पढ़ा है तो you know. H2SO4 अगर आप डालेंगे पानी में तो dilute conditions में A and B happen. Concentrated solution conditions में this reaction happens. Okay, अब ये क्या है? What is happening here? Both of these are oxidation, which means कि ये हो रहे हैं एनोड पे. Cathode reaction is the same. Okay. In dilute sulfuric acid solution, hydrogen will be reduced at cathode. Sure, why not? उसमें क्या बदल रहा है? Let's say sure. Yeah, ये सही है. In concentrated solution, water will be oxidized at anode. Nope, that's not true. ये होगा. In dilute sulfuric acid solution, water will be oxidized at anode. In dilute, yeah, sure. Water oxidize करके मतलब ये फॉर्म कर रहा है. यहाँ पे मैंने लिखा भी है. अगर if you haven't read this, you have to just check the NCERT. In dilute sulfuric acid, SO4, nope, गलत है. Let's move on. 1.1 अगर E naught value है Daniel cell की, galvanic, which is a special type of galvanic cell, इसमें से कौन से correct expressions हैं? Well, you know this already. Like NF
E naught is equal to delta G. There is a minus sign here, okay, which is also equal to minus RT ln K, which is also equal to minus 2.303 RT log K. अब मैंने इतनी कहानी लिख दी. All you've got to do is move things around a little bit, है ना? N value यहाँ here is going to be 2, which means this option is correct and also this option is correct. क्यों? क्योंकि 0.059 क्या है 0.059? It is just RT by F at room temperature, है ना? And E naught values है तो it's at the and standard like 1 bar pressure and all of that. Cool. Let's move on. KC हो जाओ यहाँ पे डाल दो. So this is 20th one is 2 and 3. आगे बढ़ते हैं. Conductivity of an electrolyte solution depends on what? Conductivity. Conductivity doesn't depend on anything. Well, it does depend on some things. It doesn't depend on this. Distance of electrodes. You'll be like, wait, hold on. I have R equal to rho L by A, which means ki rho, which is 1 by rho, which is conductivity, kappa, is going to be equal to 1 by R into L by A. So like, hey, look at this, kappa depends on L by A. No, it does not, my good friends. It gets balanced out. Okay, अगर तुम इसको बदलोगे तो ये R भी बदल जाएगा. ठीक है? Hence, that's not the right answer. Power of AC source. That sounds a little shady, right? Let's cut that out as well. Yes, yes. Let's move on. Lambda m naught for H2O. Now, this is a complicated question. It's not this direct. It may seem like, hey, this is easy, but let's think about it. This one is doable, right? So you've got strong acid, strong base, and you've got a salt. You subtract them both, so these guys get cancelled out. You get water. Perfect. Exactly same चीज यहाँ पे हो रही है ऐसा लग रहा है. Wait, let's see. Oh no, this is not it, right? HNO3 यहाँ पे दोनों जगह NO3 minus ions are getting added. Not good. This one looks good to me. HNO3 and NaOH minus NaNO3. But you know what is weird? For some reason, आपकी NCERT में ये वाला mark नहीं है. I'm just looking at the answer key right now just to make sure. Right? 22, it's saying this is not right, but that's weird. What they have given marked correct is this, which is a little bit shady because there is no way for you to know this directly. I mean, you can find it out indirectly. हमने ऊपर ही एक देखा था. But ठीक है, this also kind of works. If you know both of these, you can cancel out NH4 and Cl. So kind of works. So theoretically, ये तीनों सही होने चाहिए in your exemplar. That's not what's given. If you want to have a discussion on this, leave comments here or come to Discord. What will happen during the electrolysis of an aqueous solution of CSO4 by using platinum electrodes? Platinum electrodes मतलब inert. मतलब कि वहाँ पे what's important is that you have at the anode oxygen निकलना. That's the main difference. That's happening for sure, right? If you don't know this, please revise the theory. Oxygen निकल रहा है एनोड पे, कैथोड पे तो ठीक है, कॉपर ही डिपॉजिट होगा. क्यों? क्योंकि CuSO4 कहाँ से आ रहा है? You got platinum electrodes and oops, that's a funny beaker. Wow, shouldn't try drawing. You got CuSO4 over here. ठीक है? Maybe you got one more similar thing यहाँ पे CuSO4 again. अगर आप electrolysis पे करोगे, so CuSO4 gets deposited over here. Copper 2 plus gets deposited over here. Now, why doesn't copper also come into solution? Because where will it come from, boss? This is an inert electrode. The only thing that can happen at the anode is oxygen being, getting out. And you know the reaction. I'm not going to bore you with the details. पानी का ऊपर reaction लिखा था, NCERT पढ़ो, you'll figure that out. Be careful about this. Do not say, it looks like मैं दोनों को यहाँ पे डाला है मैंने. Do not say that this happens, right? Or obviously ये भी नहीं होगा. Copper will dissolve anode. Dissolve from what? Right? Platinum electrode है, कहाँ से dissolve करेगा? Next case में, if I take copper electrodes, then both of these will happen, right? Copper है electrode, वो dissolve भी करेगा, उसी पे deposit भी होगा, दूसरे पे deposit होगा, एक पे एक dissolve करेगा. So deposit and dissolve, none of these other two. ठीक है? And obviously deposits at the cathode because reduction, है ना? And इसलिए ये वाला गलत है. Conductivity kappa is equal to what? मैंने ऊपर ही लिखा था. Yeah, I wrote this expression and this is the same as this. G star is equal to L by A. R equal to rho G star, which is the cell constant. बहुत जल्दी हो रहे हैं. Yeah, electrochem में unless you have numericals, these theory things are quite doable. Molar conductivity of ionic solution depends on what? Temperature, I feel for sure. Distance between electrodes? What? I don't think so. Yeah. 1000 factor क्यों आता है? Derivation मालूम है? नहीं मालूम है तो theory देखो. Concentration of electrolytes for sure. Surface area of electrodes. Surface area of electrodes. See, that's L by A, right? That's still in that G star वाली चीज. देखो, distance and surface area of electrodes, I think are the same thing, same idea being discussed in two different points of view. So let's cross those out. For the given cell, Mg, Mg2 plus, Cu2 plus, Cu. Yeah, this is just a cell representation वाला question. Yeah, this is the anode, this is the cathode.
With that we can figure it out. Mg cathode, no, it's the anode. Copper cathode, that is correct. Cell reaction is this, ये भी सही है. Cu is oxidation, no. Cu is getting reduced. फिर तो सही हो गया ना. Why did I mark that wrong? Cell reaction is Mg plus CO2 plus. Give me Mg2 plus Cu. This looks good to me. I'm going to look at it one more time because according to your good friend, Cu is oxidizing agent. Oh, see. That's the funny thing. If this is a reaction, then this is getting oxidized. So this is the, reducing agent. Okay. And Cu2 plus becomes Cu, which means it is getting reduced. So this must be the oxidizing agent. Okay, but what is oxidizing agent? It's copper 2 plus, it's not copper, right? Not copper, it's copper 2 plus that's oxidizing agent. Although it's, yeah, so ये हम लोग ऊपर भी रिवाइज कर चुके हैं. Wow, that's it, we're almost done. Some more questions left. कौन से वाले बचे हैं? Assertion, reason. That's what I'm scrolling down to. Question number 56. We'll just figure out which one's right, which one's wrong. And there are 5 options, right, that they give you. कि इनमें से कौन से आपको pick out करने हैं. First into our, as usual. The third one is assertion is true, reason is false. Fourth are दोनों false and assertion is false, but reason is true. ठीक है. Copper is less reactive than hydrogen. I think it's more reactive. I don't think it's less reactive. That means assertion false, right? Assertion false, right? Assertion false कहाँ पे आ रहा है? Wait, copper is less reactive than hydrogen. No, this is true. That's why it doesn't get it out. Yeah, this gets a little confusing, right? Cu2 plus by Cu. Is that value positive or negative? Right? Since it's positive, that means that it's a, it likes getting reduced more than hydrogen. This value is positive. Check out the activity chart, the reactivity chart. What is it called? E naught Cu2 plus to Cu is negative. Oh, cool. Okay. I just said it's positive. So this one's wrong. Which one is that? Yeah, this is option 3. The assertion is true and the reason is false. Next one. E cell should have a positive value for cell to function. Cool. What is E cell? It is E naught or E cathode minus E anode. अगर ये कम है तो ये नेगेटिव हो जाएगा. So this is false. फिर से वही है क्या? है ना? फिर से वही लग रहा है? Yeah, option 3 again. On this too. Let's just say 3 here instead of Roman numerals. I'm just going to put a 3. Conductivity of an electrolyte. Conductivity of all electrolytes is on dilution. बिल्कुल सही बोला. All on dilution, number of ions. Exactly. By the way, that's the molar conductivity, okay, that you're thinking of. No, but nahi, conductivity सबकी कमी होती है. So this is 1. Roman numeral 1, but we'll just be lazy and write the number 1. 59. Lambda m for weak electrolyte shows a sharp increase when the electrolyte solution is diluted. बिल्कुल सही. I've shown the graph also ऊपर. For weak electrolytes, degree of dissociation increases with dilution solution. यार दोनों सही लग रहा है. कारण भी सही है. Perfect. Mercury cells do not give a steady potential. Yeah, of course they do. Like it's one of the standards, right? So this is wrong. False. In the cell reaction, ions are not involved in solution. ये तो मुझे सही लग रहा है. Do you remember the reaction? If not, NCERT. Which is false and true, by the way. False and true was option 5. False and true. Where are we going? Option 5. Electrolysis of NaCl solution gives aqueous or normal? Chlorine at anode instead of oxygen. Well, I'm guessing this is aqueous. Oh, solution, right? ठीक है, solution मतलब aqueous ही हो गया. Great. Gives chlorine instead of oxygen. Formation of oxygen at anode requires lower voltage. Yeah, I wanna say yeah. Great, awesome, perfect, बढ़िया. But hey, hold on. Did we just do something else on top? We'll just confirm. Assertion. For measuring resistance of an ionic solution, an AC source is used. Perfect. Why? क्योंकि DC source डालो तो concentration ही बदल जाएगी because electrolysis will take place or so that's perfect. I think both of these are good and reason is the right reasoning is the क्या बोलता हूँ ऊपर? Reason is correct explanation of assertion. Yes. Current stops flowing when E cell is 0. Yes. Equilibrium of cell reaction is attained. बिल्कुल सही. Yeah. Wow. Lot of ones here. 64. Ag plus Ag increase in concentration of ions. Positive value, cool. Does it increase in concentration of ions? Well, how would I write it? Right, I would write Ag plus and Ag
to be, how do you do this? You write E naught value, है ना, for the same thing. Oh, Nernst equation, that's half the answer. Nernst equation minus, what is it, minus क्यों था? Yeah, minus works, minus RT ln K divided by NF, right? Okay, and what is ln K? If you have AG plus becoming AG, that means ये हो गया 1 by AG plus हो जाएगा ln K, right? ln of this whole thing right here. Okay, cool, perfect. तो अगर मैं AG plus को बढ़ाऊंगा तो concentration AG plus बढ़ाऊंगा, then this will increase. सही है, right? Why? Because log of 1 by B equal to minus log B. Oh, this whole thing is behind my head. Apologies, my good friends. Let me scroll a little bit. Now, here's the thing. ये दोनों सही हैं, but the reason behind the assertion is the Nernst equation. Pardon my handwriting. Now you know why I write beforehand and not live. Nernst equation. So, दोनों सही हैं, but कारण, that's not the right reasoning. Copper sulfate can be stored in zinc vessel. Of course not. If you do, they will react. Zinc is less reactive than copper. Huh? But yeah, that's the truth. Wait, is it? Zinc is less reactive, more reactive than copper. Less reactive, more reactive. Okay, copper sulfate in a zinc vessel. क्या होगा? What is the worst that could happen? The worst that could happen is zinc will form Zn2 plus 2 electrons. And copper 2 plus will get reduced and give you copper. That's exactly what they want. Right? So, you can't store it because zinc is less reactive than copper. Is zinc less reactive? What do you mean more reactive, less reactive? Well, in your series, if you have hydrogen over here, right, and then stuff that's negative is on top, I know that's a little funny, and stuff that's positive at the bottom, negative ho gaya matlab zinc, 2 plus giving you zinc. We're doing reduction potentials, by the way. This is positive, I don't know, what is this? This is, did I write it ulta? Well, I have to look the thing up. I feel like इस चीज़ को मैं हमेशा भूल जाता हूँ. So I will open up NCERT. Let's do that. Why not? है ना? Because that's the best thing to do right now. कोई doubt, when in doubt, check it out. Yeah, but it's more reactive, dude. That's the whole point, right? Zinc is more reactive than copper, and that's why you can't store it in the thing, in the nice thing. So both are false. Yeah. Let's just move ahead with that. I want to quickly go ahead and look at something else here. We said very confidently कि यार जब aqueous electrolysis होता है NaCl का, chlorine निकल जाता है instead of O2. But what did we say on top over here? Hold on. There was one question. We'll take a minute to figure this part out. एक सवाल था, कहाँ गया वो? This right here. I confidently said oxygen निकल जाता है. Which of the half cell reactions will happen at the anode? The plot thickens. What do you think the answer to this is going to be? Is it going to be, well, oxygen or is it chlorine? Because clearly, ये तो कम हो रहा है, but over potential के कारण ऑक्सीजन नहीं निकलना चाहिए, क्लोरीन निकलेगा, है ना? Sure, hydrogen निकलता है at the, what do you call it, cathode, no doubt about that, right? But this answer I feel should be 4 and not 2. So, sorry about that. Anyway, that's it from electrochemistry. And come on to Discord if you have any doubts and check for theory sessions. As always, go to the bento.me link. You'll find everything there. See you around. That was electrochemistry.